Yes. Now the speed limits to the vehicle whenever it is moving along the bank curve road. First we'll discuss about the lower speed limit. मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है जिसके साथ में व्हीकल सेफली मूव हो सकता है. सो लोअर स्पीड लिमिट. नाउ जैसा मैंने अभी आप बताया था कि अभी हमने जो एक्सप्रेशन डिराइव किया था फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग एंड सरफेस स्पीड, इन दैट हम लोगों ने फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को निग्लेक्ट किया था. अब इस एक्सप्रेशन में हम देखेंगे कि यहाँ पे फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे रोल प्ले करता है इसकी लोअर एंड अपर स्पीड लिमिट डिसाइड करने के लिए. क्योंकि व्हीकल जब भी उस बैंक कर्व रोड पे मूव करेगा तो जरूरी नहीं है कि वो उसी से स्पीड से मूव करेगा. तो उस समय किस तरह से फ्रिक्शनल फोर्स उसमें रिस्पॉन्सिबल रहेगा या उसका रोल क्या रहेगा, ये हम यहाँ डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले कि लोअर स्पीड लिमिट कैसे मेंटेन होगी, तो उसके लिए हम यहाँ देखते हैं दिस इज द बैंक कर्व रोड. अब यहाँ पे जो फोर्सेस एक्ट होंगे, जैसे अभी हम लोगों ने इसके पहले व्हीकल के लिए देखा था कि यहाँ पे ये जो व्हीकल है इट इज मूविंग अलोंग दिस बैंक कर्व रोड विच इज बैंक्ड एट एन एंगल थीटा. ये इसके व्हील्स. नाउ हियर इस पे जो फोर्सेस एक्ट हो रहे थे अभी हम लोगों ने देखा था पहले नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिस एन, उसका वर्टिकल कंपोनेंट एन कॉस थीटा, दिस इज एंगल थीटा. सो हियर इट इज n cos theta, this is n. इसका weight mg in the vertically downward direction, weight mg. और यहाँ पे जो horizontal component है normal reaction का, this is n sin theta. अब ये जो n sin theta की वैल्यू है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस नहीं कर पा रही है, या हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ द व्हीकल इज सच दैट इट इज लेस देन under root rg tan theta. rg tan theta, what is this? This is the safest speed, vs. I can say it is the safest speed. तो इससे लेस स्पीड पे व्हीकल इस बैंक कर्व रोड के अलोंग मूव हो रहा है. इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv1 square upon r, this will be less than n sin theta. In this situation, because v1 is less than this surface speed, so obviously there is centrifugal force which is acting in the outward direction, so that will be less than n sin theta. तो इसका मतलब है कि ये n sin theta जो है ये पूरी तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले नहीं कर रहा है, वो उसको सेफली उस हॉरिजॉन्टल कर्व उस कर्व रोड के अलोंग मूव नहीं करेगा. ऐसे समय द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द व्हीकल tires of the vehicle and the surface of the road, it is fs. It acts in along the road, it is acting along the surface of the road, but it is pointing in the outward direction towards the outward edge. So here again we can resolve this force of static friction into its horizontal and vertical component. So here its horizontal component in this direction. Now here you can see this will be angle theta, so its horizontal component will be fs cos theta, and in the vertical upward direction it will be fs sin theta. So the force of static friction fs, which is acting along the surface of road but it is pointing in the outward direction, or we say at the towards the outer edge of the banked road. इसके हम दो कंपोनेंट्स बनाएंगे, इसके दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे. एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट fs cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट fs sin थीटा. ये cos थीटा कैसे आया है, ये जो एंगल है सरफेस ऑफ रोड मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, सो अगेन दिस एंगल विल बी आल्सो थीटा. सो हियर इट इज fs cos थीटा fs sin थीटा. सो हियर यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द फिगर. अब यहाँ पे जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं इस व्हीकल पे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में n cos थीटा और fs sin थीटा, कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन n cos थीटा और कंपोनेंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन fs sin थीटा इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. ये दोनों मिलके बैलेंस करेंगे वेट mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो आई कैन राइट द एक्सप्रेशन एज mg इज इक्वल टू n cos थीटा प्लस fs sin थीटा. दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन. Then in the horizontal direction, अब यहाँ पे
जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये n sin थीटा कंपोनेंट से स्मॉलर है, तो अब Fs cos थीटा कंपोनेंट n sin थीटा के साथ इस तरह से कंबाइन करेगा कि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को पूरी तरह से बैलेंस करेगा। तो यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं, हियर इट इज m v1 square upon r, v1 is the lower limit to the speed, या lower side limit, so v1 square is equal to, now here it is n sin theta, now it is n sin theta is towards the center of the curve road, and Fs cos theta component, it is out in the outward direction, it is opposite to the direction of the n sin theta, so here n sin theta it will be minus Fs cos theta. So now these are the two force equations which are acting on the vehicle moving along the banked road but moving with the velocity less than the safest velocity. Okay, now after this if we simplify this expression, हम इनका रेशियो लेंगे, यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस का रेशियो लेंगे। अब यहाँ पे वेलोसिटी को मिनिमम पॉसिबल स्पीड के लिए you can see here from this expression कि मिनिमम पॉसिबल स्पीड के लिए Fs की वैल्यू अगर मैक्सिमम रहती है तो it will have the minimum possible speed. So what is the maximum value of Fs? Fs maximum, it is nothing but mu s n. Okay, so इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और 1 और 2 इक्वेशन लेके उन दोनों को सॉल्व करेंगे, उनका रेशियो लेंगे। सो यहाँ पे एक्सप्रेशन हो जाएगा mn will get cancelled, so here v1 square upon rg, that is equal to, now here it is n sin theta minus Fs cos theta, that divided by n cos theta minus Fs sin theta. अब हम Fs की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे mu s n. So for minimum possible speed, Fs should have the maximum value. Here it should be n cos theta plus Fs sin theta. So Fs should have the maximum value which is mu s n. तो ये चीज हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और n को कॉमन निकालेंगे। तो here I can write v1 square upon rg, that is equal to n sin theta minus, instead of Fs, mu s n cos theta, that divided by n cos theta minus, plus mu s n sin theta. करेक्ट। अब यहाँ इस एक्सप्रेशन में हम n cos थीटा को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से हम इनको कॉमन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा n cos थीटा हमने कॉमन निकाला, तो हियर इट विल बी n cos थीटा, इन ब्रैकेट इन द न्यूमरेटर इट विल बी sin थीटा अपॉन cos थीटा minus mu s, and in the denominator n cos theta is taken common, so here it will be 1 plus mu s sin theta upon cos theta, isn't it? Now this will get cancelled, sin theta upon cos theta, it is tan theta, so tan theta minus mu s divided by 1 plus, this is mu s tan theta. Okay, so the expression for minimum surface, minimum speed, this is v1 square upon rg. So here it is the expression for surface speed. Now rg is cross multiplied and taking square root, so the expression will be so this is the expression for
with which a vehicle can safely move along the curve road. Now you can see in this expression mu s has come. इसका मतलब है कि लोअर लिमिट, लोअर स्पीड लिमिट डिसाइड करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन अपना रोल प्ले कर रहा है. सो लोअर स्पीड लिमिट ये किस पे डिपेंड करती है? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पे. म्यू एस हैज कम इन द एक्सप्रेशन. इसका मतलब है कि फोर्स ऑफ लोअर स्पीड लिमिट इज इट इज ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. अब यहाँ पे मिनिमम स्पीड कितनी होगी? तो फॉर दैट केस म्यू एस इट शुड बी इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू tan थीटा. नाउ यू कैन सी द न्यूमरेटर साइड म्यू एस ग्रेटर देन और इक्वल टू tan थीटा. So this bracket expression it will be equal to 0. Numerator will be negative or it will be 0. So obviously this V1 will be having the minimum value which is equal to 0. So this is the lower speed limit to the vehicle which is moving along the banked curve road which is banked at an angle theta. Then after that we'll discuss about the upper speed limit. Again here the force of static friction plays an important role. Here what will happen in that case with the same figure? Now in that case again we'll obtain similar expression. What will be the changes that we'll discuss here? So the next is the upper speed limit. This is the expression for V1 is equal to under root Rg tan theta minus mu s upon 1 plus mu s tan theta. It is the lower speed limit. Now after that we'll obtain expression for upper speed limit. Is now the upper speed limit for the vehicle moving along the bank curve road. That means what will be the maximum possible speed with which it can be moved safely. Vehicle बैंक कर्व रोड पे मैक्सिमम कितने पॉसिबल स्पीड से मूव हो सकेगा, सेफली मूव हो सकेगा, तो उसका एक्सप्रेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे. जैसा कि हमने लोअर स्पीड लिमिट में डिस्कस किया था, यहाँ पे जब बैंक कर्व रोड है और उसकी जो सेफेस्ट स्पीड है उससे कम में अगर व्हीकल मूव करता है तो उस समय उसके सर्कुलर मोशन के लिए अलोंग दैट बैंक कर्व रोड उसको जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द tires of vehicle and the road plays an important role, as we have seen here कि यहाँ पे in the for the lower limit v lower limit में यहाँ पे static frictional force जो है इसकी direction along the road होगी but in the upward direction, and thus the expression for lower limit we have obtained as v1. This will have the minimum value. It will have the minimum value when which it is greater than or equal to tan theta. Sorry, mu s is greater than or equal to tan theta. It will have the minimum value when mu s is greater than or equal to tan theta. In the expression we have obtained this, and this is possible for the lower angles. For smaller angles, it is possible that this v minimum it will be equal to 0. So minimum value of the safest speed, minimum value of the speed along the bank curve road it will be 0 when mu s will be greater than or equal to value of tan theta, and it is possible when the angle of banking theta is smaller. Okay, smaller, for the smaller angle v minimum is equal to 0. Now we'll move to the upper speed limit. What will be the expression for upper speed limit? Now here in case of upper speed limit, now here v2 it will be this will be greater than to the rg tan theta. Under root rg tan theta it is the safest speed. So अगर स्पीड जो है इस सेफेस्ट स्पीड से ज्यादा होती है तो उस समय फिर से किस तरह से स्टैटिक फ्रिक्शन का रोल होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, ये अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे. नाउ हियर v2 इज ग्रेटर देन rg tan theta. In that case mv2 square upon r, that means the centrifugal force, this will be greater than n sin theta. It will be greater than n sin theta. N sin theta means horizontal component of normal reaction. So इस केस में mv square मतलब आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इट इज ग्रेटर देन n sin थीटा. अब यहाँ पे अगर आउटवर्ड फोर्स अगर ज्यादा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर ज्यादा होता है तो व्हीकल सेफली मूव नहीं होगा, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में स्किड होगा. तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इट इज नाउ
along the road but in the downward direction. It is along the road but in the downward direction. So here we can have the direction of force of static friction for the bank curve road, it will be in the downward direction. Now we can again resolve this force of static friction into horizontal and vertical component. This vertical component, it will be in the downward direction. So this will be horizontal component. This is Fs cos theta, horizontal component, and the vertical component in the downward direction, it will be Fs sin theta. So in this case, for the upper speed limit, means when the vehicle is moving greater speed than the surface speed, इस condition में for centrifugal force, it will be obviously greater than n sin theta. N sin theta means horizontal component of normal reaction. So in that case, to avoid the skidding or to adjust the circular motion of the vehicle along that bank curve road, this Fs, that is the force of static friction between the tires of road and the between the tires of vehicle and the surface of road, it will be along the road but now in the downward direction. So here the expressions, now the different forces acting on the vehicle for the surface, what will be the equation that we'll discuss here. तो यहाँ पे जो डाउनवर्ड जो वर्टिकल फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक है वेट mg and Fs sin theta component of static force of static friction, both are in the vertical downward direction, and n cos theta in the upward direction. So here this weight mg in the vertical direction, it will be balanced by the combination of n cos theta and Fs sin theta. So I can write expression n cos theta minus Fs sin theta. Okay, weight mg in the vertically downward direction is balanced by the combination of n cos theta and Fs sin theta. Now similarly, in the horizontal direction, the outward centrifugal force, it is being balanced by the combination of n sin theta and Fs cos theta. The component, horizontal component of normal reaction and horizontal component of force of static friction. So I can write the expression m V2 square upon R. Now V2, we are using the symbol V2 for the upper speed limit. So mv2 square upon R, this is equal to, now here it is n sin theta plus, it will be Fs cos theta. It is plus because both are in the same direction. N sin theta and Fs cos theta both are pointing towards the same term. Okay, so therefore the plus sign. Okay, so these are the two force expressions for the vehicle which is moving along the bank curve road for the upper speed limit. Okay, now again here V2 will have its maximum value when Fs, force of static friction, which is having its maximum value. Now for V2 max, here Fs will have its maximum value which is equal to mu Sn. Okay, so we'll substitute here in this expression and again we'll solve as we have done in the lower speed limit. So we'll substitute here this here in this expression. So here mg is equal to n cos theta. Instead of Fs, I'll write mu minus mu Sn sin theta, and for second expression mv2 square upon R, this will be equal to n sin theta plus mu Sn cos theta. Similarly, we'll take the ratio here mv2 square upon R upon, mv2 square upon R in divided by mg. So here it will be mg, that is equal to, now it will be n sin theta plus mu Sn cos theta, that divided by n cos theta minus mu Sn sin theta. Again
we will take here n cos theta outside from both the expressions in lower and upper in the numerator and denominator. Now on the left hand side m will get cancelled. So on the left hand side the expression will be v2 square upon rg, that is equal to taking n cos theta common from numerator and denominator. So the first expression in the numerator, it will be, first term will be tan theta on the similar line as we have done in the lower speed limit. So tan theta plus mu s, that divided by, again n cos theta common, so here it will be 1 minus mu s tan theta. Okay, so this is the expression. Now therefore v2 square, so here v2 will be equal to cross multiplying rg, and then in the bracket it will be tan theta plus mu s, that divided by 1 minus mu s tan theta. It will be in the under root. So this is the expression for maximum speed limit of the vehicle. Now what will be the value of the maximum speed with which a vehicle can move along the bank curve road? So here for that, if here mu s is equal to, if mu s is equal to 1 by tan theta, or we can say it is nothing but the cot theta. 1 by tan theta means cot theta. So if mu s is equal to 1 by tan theta, the denominator will become 1 minus 1, it will be 0, and therefore v2 max, it will be equal to infinity. Okay, and this is possible, this condition is possible when theta is greater than or equal to 45 degree, because for tan of 45 it is 1, so 1 minus 1 it will be 0, and for greater angle than 45, again the denominator will be in such a way that the v2 max, v2 will have its maximum value which is equal to infinity. Okay, so this is the expression, this condition is when the mu s is equal to 1 by tan theta. In the textbook it is given mu s is equal to cot theta, one and the same thing. So theta will be greater than or equal to 45 degrees. Now we will recall the motion of the vehicle on the plain horizontal curve road, and nextly the second application, the motion of the vehicle on the in the well of death. Plain horizontal curve road पे angle theta was 0 degree. Okay, the lower speed limit, उस condition में उसकी maximum speed limit decide हुई थी. Then उसके बाद में vehicle for well of death, if we consider vehicle is moving on the wall of the well, so for that case, if we see here the road, we can consider the wall as a road. So in that case the wall of the road, it is making an angle 90 degree. Just see here, here suppose this is the horizontal and here this is the wall of the well, so this is making an angle 90 degree. Okay, so here we can say the angle of banking is 90 degree, which is greater than 45 degree, and in that situation it has put the limitation to the minimum value of the speed. Okay, so you just remember for for angle of banking greater than 0 degree and less than 90 degree. Okay, थीटा की वैल्यू, एंगल ऑफ बैंकिंग की वैल्यू, ये अगर 0 से ग्रेटर है, 0 डिग्री जब 0 एंगल था मीन्स हॉरिजॉन्टल बैंक रोड, हॉरिजॉन्टल रोड, आई एम सॉरी नॉट बैंक रोड, इट इज हॉरिजॉन्टल कर्व रोड. उस हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे उसको व्हीकल को मैक्सिमम स्पीड लिमिट थी, और जब डेथ ऑफ वेल में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो उस समय उसको व्हीकल को स्किड नहीं होना है, इसलिए उसकी लोअर स्पीड लिमिट है. But for angle lying between 0 and 90 degree, the speed is having, whenever the vehicle is moving along that road, the speed is having lower speed limit as well as upper speed limit. Okay,
इसके लिए अगर बैंक कर्व रोड है जिसका एंगल ऑफ बैंकिंग 0 और 90 डिग्री के बीच में होता है, 90 इज नॉट एट ऑल पॉसिबल क्योंकि उस समय तो व्हीकल रह ही नहीं पाएगा, बट लाइन बिटवीन दिस, तो उस समय वो व्हीकल को अगर सेफली मूव होना है तो उसको उसकी लोअर लिमिट स्पीड की लोअर लिमिट से ज़्यादा स्पीड लिमिट मेंटेन करते हुए और अपर स्पीड लिमिट से कम स्पीड मेंटेन करते हुए, प्रॉपर स्पीड मेंटेन करते हुए उसका बैंक कर्व रोड में मूव होना है। सो फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग लाइन बिटवीन 0 and 90 degree, it will have the speed of the vehicle will have lower speed limit as well as upper speed limit. Yes, now the last application of uniform circular motion or horizontal circular motion, that is a conical pendulum. अब conical pendulum होता क्या है, इस चीज को हम पहले डिस्कस करेंगे। तो कोई भी अगर वेटलेस मास पॉइंट, जिसको हम पॉइंट मास कहेंगे, उस पॉइंट मास को अगर हम लॉन्ग इनएक्सटेंसिबल मासलेस या वेटलेस स्ट्रिंग से जब हैंग करते हैं, एक रिजिड सपोर्ट से अगर हम इस तरह से, जैसे ये हो गया है दिस अ पॉइंट मास और इसको हमने स्ट्रिंग से हैंग किया है, तो ये हो गया है सिंपल पेंडुलम। और ये जब ऑसिलेट करता है, ये आप लोगों ने सबने देखा है, सिंपल पेंडुलम जब ऑसिलेट करता है तो इस तरह से ये ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट करता है, ये जो उसकी पाथ है, दिस इज द पार्ट ऑफ वर्टिकल सर्क्यूलर मोशन। हॉरिजॉन्टल, इसका जो ऑसिलेशन हो रहा है, ये ऑसिलेशन इट इज परफॉर्मिंग द वर्टिकल सर्क्यूलर मोशन। इसकी जो पाथ है, इट इज पार्ट ऑफ वर्टिकल सर्क्यूलर मोशन और वर्टिकल सर्कल। बट अगर इस ही सिंपल पेंडुलम को हम अगर उसका एंड फिक्स रखते हुए इस तरह से रिवॉल्व करते हैं कि इसका बॉब या जो पॉइंट मास है, इट इज परफॉर्मिंग, जस्ट सी हियर, इट इज मूविंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल सर्कल, इट इज मूविंग लाइक यू कैन सी हियर कि यहाँ से इसका एंड हमने फिक्स रखा है, स्ट्रिंग फिक्स है, और ये जो है ये पेंडुलम। अब ये पेंडुलम जो है ये हॉरिजॉन्टल सर्कल के अलोंग जब रिवॉल्व होगा, इस तरह से जब वो रिवॉल्व होगा, तो उसके स्ट्रिंग इट विल मेक एन एंगल विद द वर्टिकल। ओके, हियर इट इज परफॉर्मिंग द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, so this is the vertical angle made by the string with the vertical. It is as good as right circular cone. It is making a right circular cone with this angle at the vertex. This is the vertex. So ये जो एंगल है, ये जो मोशन होती है, इसको हम कहते हैं conical pendulum. Okay, when the bob or the mass of the pendulum, it is performing horizontal circular motion with its one end of the string is fixed, and this string is making an angle with the vertical, then this motion is known as, this whole system is known as conical pendulum. और ये जो conical pendulum जो motion perform करेगा, तो इसके जैसे इसका जो mass है, it is moving along the circle, horizontal circle. So at different positions here, we'll see what are the different forces acting on it, how it is performing the motion, and how this motion will be uniform circular motion. We'll discuss here. So we'll just consider, this is the horizontal circle along which the bob is moving. Here r is the radius of this circle. Now this is the fixed point यहाँ पे। अब ये ऑब्जेक्ट, सपोज ये बॉब जो है, ये पॉइंट मास जो है, इट इज एट दिस पोजीशन, सो हियर दिस स्ट्रिंग अटैच टू इट, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल. Now at this position, now it is moving in the anti-clockwise direction along the horizontal circle. So what are the different forces acting on it? Now first is the weight mg of the mass, weight mg in the vertically downward direction. Nextly, the tension in the string, it is acting on it at different position. This tension is along the string and it is pointing towards the fixed end. The direction of the tension, it is always pointing towards the fixed end. One situation we'll consider here.
अगर स्ट्रिंग में टेंशन नहीं है, इफ इट इज नॉट टेंशन मीन्स इट इज टाइट, अगर स्ट्रिंग में टेंशन नहीं है तो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा? नो। अगर स्ट्रिंग स्लैक हो जाता है तो ऑब्जेक्ट वोंट परफॉर्म द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन. सो ऑब्वियसली द टेंशन इट इज एक्टिंग ऑन द मास ऑफ द, अगर स्ट्रिंग अगर स्लैक हो जाता है तो देयर वोंट बी द सर्कुलर मोशन. So here tension in the upward direction. Now will resolve here the tension T. Now as it is moving, अगर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो रही है मतलब नेट फोर्स जो बॉडी पे एक्ट हो रहा है या पॉइंट मास पे एक्ट हो रहा है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है. तो इसका मतलब है कि ये जो वर्टिकल फोर्स है वेट mg ऑफ द व्हीकल, सॉरी वेट mg ऑफ द पॉइंट मास, it is being balanced by some force. So what will be that force? So for that purpose we have to resolve this tension T into two components. One in the vertically upward direction. This is the, now here this will be angle theta, so this component will be T cos theta, and the another component in the perpendicular direction, that is the horizontal component, and this will be T sin theta. So these are the forces acting on the point mass which is performing the horizontal circular motion. That is the in case of the conical pendulum. So weight mg is being balanced by, I can write the force equations here. The different forces, weight mg is being balanced by the vertical component of the tension, tension in the string. Here theta is the angle made by the string with the vertical at the fixed end of the string. Now the another equation. Now in the horizontal direction, the horizontal force T sin theta. Now again for performing uniform circular motion, this T sin theta component of the tension, it is pointing towards the center of the horizontal circle. So this is behaving as a centripetal force. Now to perform the uniform circular motion, this centripetal force is being balanced by the centrifugal force. So here we can write, ये horizontal circular motion इस conical pendulum की होने के लिए, इस point mass की होने के लिए, ये T sin theta it will be balancing the outward, I can write here, I can draw here, this is the outward centrifugal force mr omega square. Okay, this T sin theta is balancing mr omega square, which is equal to T sin theta. See here, all the terms, m mass of the bob, this mass of the body, r the radius of the circle, horizontal circle, omega is the angular speed of this point mass which is performing the uniform circular motion, which is again constant. So here omega, T the tension in the string, and theta is the semi vertical angle of the cone. जब cone form होगा, string इस तरह से घूमेगा, जो उसका string है, it will make the cone. तो वो जो cone angle बनाता है center पे, उसको हम semi vertical angle कहते हैं. तो ये जो angle है, angle theta. Now in this expression, now if we take the ratio, here it will be mm will get cancelled, so here it will be r omega square upon g, that is equal to, now tt will get cancelled here, so here it will be tan theta. This is 1, this is 2, equation 2 divided by equation 1. So here it will be r omega square upon g is equal to sin theta upon cos theta, so it will equal to tan theta. So now again here, अब यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, दिस इज थीटा, दिस सेमी वर्टिकल एंगल, तो यहाँ पे ये जो है, दिस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यहाँ से दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अटैच टू द बॉब. सो दिस कंपोनेंट, दिस विल बी L cos theta, and its perpendicular length it will be L sin theta. Now which is nothing but the radius of the circular motion. Okay, so here I can write r is equal to L sin theta. L is the
length of the string attached to the point mass or length of the conical pendulum. Okay, so here instead of r we can write L sin theta. So r can be written as, here it is, L sin theta, L sin theta omega square upon g. Or before that we'll just arrange the terms. Here omega square is equal to, I can write it as g tan theta upon r. Now instead of r I'll write L sin theta. So here g, and again tan theta can be written as sin theta upon cos theta, as it is जो जब रेशियो लिया था तब sin theta upon cos theta. So here it is sin theta upon cos theta, and for r it is L sin theta. So here this sin theta term will get cancelled. So here it is omega square is equal to this is g upon L cos theta. Omega is equal to g upon L cos theta. Now what will be the time period of the revolution? जब ये रिवॉल्व हो रहा है तो उसका टाइम पीरियड कितना रहेगा, उसका एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे. तो ओमेगा जो है, therefore ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ g upon L cos theta. Now omega is 2 pi upon t. Okay, omega is 2 pi upon t. So that is equal to under root g upon L cos theta, or so expression for time period it will be from this expression. This just by arranging the terms we can write t is equal to, just by cross multiplying and arranging the terms. So this will be equal to 2 pi under root L cos theta upon g. So this is the expression for time period of the conical pendulum. Okay, whenever a conical pendulum is performing circular motion, at that time the time period is 2 pi L cos theta. Now again we can obtain from here, we can obtain the expression for frequency of the conical pendulum. So n is equal to, frequency is reciprocal of time period, so n will be equal to reciprocal of this small n is equal to 1 upon t, which is equal to just reciprocal of this. So here it is 1 upon 2 pi under root g upon L cos theta. Now what is the use of this, we will discuss here. Now suppose we consider कि theta is 90 degree. Theta 90 degree कब होगा? जब ये string horizontal हो जाएगा. यहाँ ये जब स्ट्रिंग हॉरिजेंटल हो जाएगा, मतलब हम पकड़ के अगर उसको घुमा रहे हैं और इससे इतने स्पीड से घुमा रहे हैं कि स्ट्रिंग जो है हॉरिजेंटल हो जाएगा, तो उस समय थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. अगर थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो हियर द टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 0 एंड फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू इंफिनिटी. नाउ दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. ओके, इसलिए जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल लेकर घूमेगा तो कोनिकल पेंडुलम विल हैव द इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी. ओके, दिस इज अ स्पेशल केस, सो डू रिमेंबर दिस थिंग. द लिमिटिंग एंगल थीटा it can't be equal to 90 degree. That means the string can't be, when it is revolving in the horizontal circular motion, the string won't have the theta, that is the angle 90 degree, theta 90 degree. So this is the last application of the uniform circular motion, that is the